Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next attempt. And today I am here especially for our CS students जिनका result आने वाला है on 25th of February. And today एज इट इज अ मंडे मोटिवेशनल वीडियो तो रियल मोटिवेशन तो होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको याद रखनी चाहिए बिफोर फेसिंग any results, right? So it will help you stay calm, it will help you accept in a graceful way, and it will help you face your results as well. But before that, if you're new to my channel, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. So let's start with the video. So starting with the first thing जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, which is results don't define us. As in, results हमें define नहीं करते, right? We are way more than our results, our hard work, our efforts, our dedications, they all are very, very important, and results actually don't always validate it, right? Of course, if you are hardworking, if you are putting in effort, sooner or later you will get good results, but still you should always remember this one thing कि जो results होते हैं वो हमारे हार्ड वर्क को एफर्ट्स को हमेशा हर बार डिफाइन नहीं करते। कभी कभी हमने बहुत कम एफर्ट डाला होता है बट रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। कभी कभी एफर्ट ज़्यादा होता है, हार्डवर्क भी ज़्यादा होता है बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। सो ऑलवेज रिमेंबर that yes, result is important, good result is very very important, but results ultimately don't define us. Our life, our careers are way more than just results. तभी आप अपने efforts को, अपने hard work को भी appreciate कर पाओगे, right? Moving to the second thing, I would say that success and failure are part of every journey, right? I think जितना सक्सेस इम्पॉर्टेंट है उतना ही फेलियर भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ लेसन्स इन every journey, whether it's your career, whether it's your life, right? So always remember that these two things go hand in hand in your life also, in your career also, in your professional degree courses also. So always remember this. Once you accept this thing, it will be easier for you to move ahead. अगर आप यही सोचते रहते हो कि सिर्फ सक्सेस ही होना चाहिए, दैट विल नॉट हेल्प यू ग्रो, नॉट एट ऑल। और अगर आप ये सोचते हो कि फेलियर से हम डीमोटिवेट होते हैं, नो, एक्चुअली में फेलियर से हम सही तरीके से मोटिवेट होते हैं। एंड इफ यू आर सक्सेसफुल एवरीवेयर, यू लैक दैट एरिया ऑफ स्कोप, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा हंसी भी नहीं रहेगी, दुख भी नहीं रहेंगे। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, इट विल बी इजियर फॉर यू टू फेस एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ लाइफ, ऑफ करियर, ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो, राइट? तो ये दूसरी चीज आपने हमेशा याद रखनी है। The third thing, which is very important, is that you can always change them with your hard work. So you should always remember this, that sometimes we do hard work but it is not in the right way, right? Like for example, we always guide that your strategies should be right, your method should be right. If they're not working, change them. So in the same way, results, like I told you in the first point, results don't define you because you can always change them with your hard work, with your smart work, with your correct effort. Never get stuck with the fact कि रिजल्ट्स हमेशा स्टेबल हो जाते हैं या रिजल्ट्स हमेशा सेम आते हैं। अगर आप अपने हार्ड वर्क को चेंज करोगे, अपने स्मार्ट वर्क को चेंज करोगे, अपने एफर्ट्स को चेंज करोगे, एक्चुअली यू कैन चेंज द रिजल्ट्स एज वेल। सो रिजल्ट कोई भी है, जैसा भी है, आप अगर अपनी करेक्ट विल पावर से उसके ऊपर मेहनत करोगे, सो डेफिनेटली यू कैन चेंज देम। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज दैट फेस your results fearlessly. Now,
Now recently I did a Q&A session on Instagram also, और सबका एक ही जवाब था कि स्ट्रेस है बिकॉज रिजल्ट्स है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ भी कमेंट सेक्शन में ऑलवेज स्टूडेंट्स आर लाइक कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सो वन थिंग इज़ देयर, एक चीज़ आप ये एक्सेप्ट कर लो, एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स बन गया है, आपने सिर्फ अब उन रिजल्ट्स को देखना है। सो ऑलवेज फेस देम फियरलेसली, हैव गिवन योर बेस्ट, राइट? नाउ जस्ट लीव इट that whatever will happen you will accept it and face them fearlessly। किसी भी बात का आपको डर नहीं होना चाहिए। आई नो थोड़ा बहुत डर होता है कि कैसे होगा क्या होगा, बट एनालाइज योर एफर्ट्स एंड सोचो कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, राइट? सो नेवर बी लाइक टू मच ऑफ फियरफुलनेस इज ऑल्सो नॉट गुड, कि अगर आप बोलो कि बहुत ज़्यादा हमें टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नो, शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है अपने रिजल्ट्स को बदलने के लिए, राइट? सो अपने रिजल्ट्स को आप फियरलेसली फेस करो, किसी भी तरीके का डर या एनजाइटी मत लेके आओ। मैनी क्वेश्चंस वर देयर कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एनजाइटी हो रही है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड जस्ट से प्रे एंड मेडिटेट एंड यू शुड बी रेडी फॉर योर रिजल्ट्स, राइट? तो रिजल्ट्स फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। दे आर कमिंग ऑन 25th of February, राइट? तो आपको बिल्कुल भी अब डरना नहीं है इस टाइम पे, राइट? So these are the four things that you need to remember before facing your results। रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए, इवन लाइफ के लिए, राइट? लेकिन हम रिजल्ट्स के लिए क्या माइंडसेट या क्या अप्रोच रखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द फोर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, and go and follow me on Instagram as well। My Insta ID is CS Jaspreet Dhanjal। I post a lot of motivation there as well। I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on। Bye bye।